बच्चों, let's read the question here. The question states dash is an anatomical barrier. Option A saliva, option B lysozyme, option C interferon और option D mucus. तो इसके पहले कि हम क्वेश्चन पे जाए हमको समझना पड़ेगा कि एक anatomical barrier क्या होता है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट यही है कि हम समझे कि एक एनाटॉमिकल बैरियर होता क्या है. एनाटॉमिकल बैरियर, एज द नेम सजेस्ट्स, is a type of barrier which is present because of structural specificity of the body. यानी कि बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है which is trying to provide us protection from the bacteria. So it is provided mainly due to its structure. Because इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, it tries to provide a barrier. तो anatomical barrier, if we go to think any structure, for example, अगर हम एग्जाम्पल ले स्किन का, अभी स्किन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है that it helps in providing us protection against the bacteria. स्किन obviously जैसा हमको पता है is divided into epidermis and dermis. Epidermis upper thin region, dermis lower entire region. And जो ये epidermis और dermis का साथ में there are also several glands present in the skin. All of them together help in providing a barrier to the entry of the bacteria. Likewise, अगर हम देखने जाए mucus covering, mucus covering जो हमारे respiratory tract में है, right? Respiratory tract में basically आपके trachea में है and your urino genital tract में जो present होता है, that is basically trying to provide an anatomical barrier. Because that is present, as we know, हमको पता है trachea में there is a ciliated epithelium also present. So the epithelium will tend to move the dust particles outside the body. So respiratory system में and urinogenital tract में the mucus covering which is present is trying to provide a sort of anatomical barrier. Saliva, on the other hand, if we talk about, saliva is trying to provide a barrier because of its function. Saliva in itself is known to contain lysozyme, which is a particular type of enzyme, we can say, that helps in rupturing the bacterial cell wall. जिसकी वजह से saliva turns out to be a physiological barrier because of its functional way in which it tends to provide a barrier. Lysozyme एक एंजाइम है as such, so it's not providing a sort of barrier. Interferons की अगर बात करें, interferons on the other hand tend to provide a barrier by the means of a cytokine mechanism. So it's a cytokine barrier and not an anatomical barrier. That's why option D, that is the mucus, turns out to be the anatomical barrier. So if we summarize कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, हमने पहले देखा कि एनाटॉमिकल बैरियर का मतलब क्या होता है. इट इज प्रोवाइडिंग अ बैरियर बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. फिर हमने थोड़े एग्जांपल्स देखे एनाटॉमिकल बैरियर के, जैसे स्किन एज वेल एज म्यूकस कवरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जिसकी वजह से हमको पता चला कि ऑप्शन डी, दैट इज म्यूकस, इज अ फॉर्म ऑफ एनाटॉमिकल बैरियर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.